name which has not existing now. ठीक है? Getting it? मदुरा exist नहीं करता है आज के टाइम में. That's a old story. When I was in 2012-13, when I was going for internship, that time Madura was existing. ठीक है? Okay. Next question. The last day, one day before exam, just the idea of this session is to take all your question and see. So please do tell me quickly. And I do have few questions for you guys, and rest also do participate. Anybody else apart from Jyoti and Jyoti also have a PI tomorrow. Anyone else is having a PI tomorrow? Sir, I am. और कौन है? हाँ जी, आयशा आपका भी PI कल है? Yes, sir. Okay. Okay. People who are having a PI tomorrow, please write in the chat box. Tomorrow आपका PI है ना? So just write in the chat box your name. People who is writing a name in a chat box is they all have PI tomorrow. Jyoti, Aisha, because more of you have joined. Khushi and Jyoti have joined earlier. Others, oh my God, there many of you have joined now. 1, 2, 4, 5. 5 of you having a PI tomorrow. Who is here in a meeting right now? Lavanya, you also have tomorrow only. Khushi, others, Abni, Lavanya. Okay. So there are so many of them is here. We will take their insight tomorrow, and today we will help them. So let's do one thing quickly, because I was thought it's a very lesser number, but we have so many of you. So let's do one thing. Others, you have tomorrow only, na? Yeah, correct. So in the same order, let's start with Savanya also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 of you are having tomorrow. So we'll be starting with Jyoti, and all of you are open to ask the question and give the feedback also at the end. So that's sort of the PI we will take now for them. Okay. So we'll be starting with the Jyoti. Jyoti, could you please start your PI introduction? Jyoti, you are on mute. You are muted, Jyoti. Sorry. Good evening, sir. My name is Jyoti. I'm from Rohtak, Haryana. I hold my bachelor's in BSc Honours in Community Science. Throughout my academic journey, I engaged actively in experiences including workshops, internship in a community radio station, and also immense field training in various villages. And apart from my academic, I also participated in sports event, NCC, and mountaineering. I also served as an intern in an NGO, and my main hobbies are physical fitness, sports, and cooking. Thank you. All right. So let's ask the question to Jyoti. Well, the first thing is, Jyoti, in case if you will go inside and you will say good morning, good afternoon, good evening, the feedback point of view I want to tell you. So after that, if somebody will say to introduce yourself, and you may start your introduction. So if you have already discussed with somebody, do not focus on them. I said this introduction round is for everybody, right? Not just for you and me. So don't say you always try to hello everyone, good morning everyone, good evening, good morning ma'am and sir. Even the panels are only sir, so good morning, everyone. So it has some common words and term, because you cannot even wish good morning sir, everyone separately, right? And you don't know the name also over there. So that good is evening, sir or ma'am prepare किया है sir. हाँ, तो आपका थर्ड आप में है गुड आफ्टरनून, मतलब आपका उसी टाइम में 4 बजे के आसपास होएगा, या कौन सा आपका सेकंड? 3 बजे. 3 बजे का है. हाँ, so probably it will goes after 4 also, right? So depend आफ्टरनून में है या इवनिंग में. So it's good. वो माइंड में रहेगा तो आपको इजी रहेगा. That you take care, the first part. Well, talk about your education background in detail. I hold my bachelor's in BSc Honours in Community Science.
उसके अंदर there is subject like FRM, in which family resource management. One is food and nutrition, and third one is HDFS, human development and fundamental studies, and one is textile apparel and designing. That's it. My main subject is EECM, extension education and communication management, When did you completed your graduation? in 2022, sir. 22. Okay. So you had these subjects, है ना? Yes, sir. अभी नहीं है. आप ट्राई, मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग एंड आंसरिंग इन हिंदी. सर आई हैव Yes, sir. सो एंड सो सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट था मेरा, है ना? एक Yes. एक वर्ड सेंटेंस जोड़ेंगे तो इट्स बिकम इन दैट लाइटर नोट. एंड I request others also to keep your video on so that she will have a better eye contact, है ना? And she will feel more confident. जब आप कई लोगों को अभी भी देखोगे स्क्रीन पे तो इट्स गिव यू मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल योर सर यही हुआ एक्चुअली. मैं पीआई अभी इंट्रोडक्शन दे रही थी ना, तो वीडियो ऑफ हो गया सारा, तो मैं ब्लैंक हो गई एकदम. हाँ, तो वो होता है जब कई सारे लोग ऐसे रहेंगे, तो आप वो ना, आपको ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, दैट गिव अ मोर कॉन्फिडेंट. सो टुडे यू गाइस आर हेल्पिंग ज्योति विल कम टुमारो इवनिंग टू हेल्प यू to talk Yes, about sir. her experience, है ना? ऐसे ही है. Well, anybody wanted to ask any question to Jyoti and give her any feedback? Jyoti, don't mention every subject regarding entire thing regarding your bachelor's. I tried to mention the subjects which you have strong. Like most of these subjects are interrelated, right? Try to mention the main points. Main subjects are FRM and textile and apparel designing. Yeah, like that you mentioned them, etc. If you say whole list, there may be chancing of asking more questions regarding them. So Yes. it's tough for you answering. Well, so the next question will be a last question, and we want in a same order. Aisha, you should be the ready. Next, we'll start your introduction. Yes. Anyone else wanted to ask a question to Jyoti? What is thread count? Thread count. Thread count क्या होता है? That I actually I studied, but I don't remember. No problem. All right, ज्योति, कोई बात नहीं है. आप जो है प्लीज आंसर हिंदी में करो. आप एक बार हिंदी में आप अपना इंट्रोडक्शन दो, कैसे बात करते हो देखते हैं. इंट्रोडक्शन तो शायद मैंने हिंदी में इंग्लिश में ही प्रिपेयर किया है actually. वैसे जाके बोलिएगा, बट जैसे हम बात करते हैं ना, पॉज कहाँ पे करें, फुल स्टॉप पे, बॉडी लैंग्वेज, तो Yes, उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा जो यू कीप इन. मे बी हम, अगर जरूरत हो आपको, आपका कल सेकेंड हाफ में आप मुझे दिन में कनेक्ट करिए, ठीक है? Okay. मोस्टली आफ्टर 12 o'clock आई एम अवेलेबल. डू व्हाट्सएप, ठीक है? ऑलराइट. Okay, sir. So we'll follow the same order which you have mentioned in the name. Thank you, Jyoti. So we will Okay. start with Aisha now. Hello. Hi. Should I start with introduction? Yes. Okay. Good morning, sir. My name is Aisha and I'm 24 years old. I live in Dwarka, New Delhi. I am currently working in Bhartiya International, which is a buying house, and I'm working as an assistant fashion designer. I have completed my graduation from JIMS, Rohini, in fashion design and technology. I also hold a bachelor's in psychology. In my free time, I like to bake, as I can help my mother in my in her small business of homemade cakes and chocolates. And my father, he's a CA. I have a younger brother who is in 12th standard. Great. I mean, you spoke so well in most of the point over here. And as the things which you have added, the almost everything, and in a one line. So that's quite decent. It's good to add your family, everything, and all. And it's look linked. It's not like one thing only or keep on talking in detail. So absolutely fine. And anyway, tomorrow is a PI. I hope this will go well. Well, going ahead, the question is here. More important is the difference between buying house, retail,
e-commerce? How do you see? What is the difference between these? So, buying houses are a bridge between importers and exporters. Currently, since I'm working in a buying house, we work with importers from different countries like UK, and we connect them to manufacturers in India, and we help in the sampling, in the production, in costing, and those things. Retailing, sorry, sir, can you repeat that? First of all, you are not helping the country. Okay. I'm giving a then and there feedback so that, like, it's not a formal PI. In your PI might be in end, they will talk to you something. Okay. You're not helping the country. You're helping that country brands. है ना? So आप कंपनी को कॉस्टिंग आपने जो बताया उसका मतलब आपने समझा क्या हुआ? आप यूके को कॉस्टिंग ब्रांडिंग ये वो उसमें हेल्प करते हो, क्योंकि एग्जांपल में आपने लाइक यूके बोला है ना, आपको यूके का ब्रांड बोलना है. हाँ. सो एक वर्ड मिस हुआ तो पूरा स्टोरी चेंज हो जाएगा, है ना? गेटिंग इट? ऐसे. सो यू आर हेल्पिंग द ब्रांड्स फ्रॉम यूके. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है? अगर कभी भी प्रॉब्लम हो किसी को भी, एनी वन ऑफ यू, for all of you, if you feel like it's just tomorrow, I don't want it to make it so heavy. If you stuck anywhere, you feel like, so do ask the question again. आपने जब मुझे बताया ना पहला लाइन, तभी मैं समझ गया क्वेश्चन से कहीं और जा रहे हो. They will understand, but they will give you some time, or in between someone else will ask you the question, and you will be more underconfident in that terms. क्योंकि आपको बीच में क्वेश्चन पूछ लिया, कई बच्चे रोते हुए आते, सर मैं तो बता रहा था, बीच में क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से. अरे बाबा आप आंसर नहीं कर रहे थे इसलिए क्वेश्चन दूसरा आ गया, है ना? सो डोंट जज ऑल दिस, जस्ट गो ऑन. अगर ऐसा हो भी गया तो आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है? ट्राई टू लीव इट, let it go. Only is the one ability will let you do better in your PI. If it's going worst, then also have to let it go. Next वाला पे आपको अगला better करने का कोशिश करना है. In the next second only. PI always look. It's the best way to judge yourself. The find yourself. It's a very interesting task. Well, going ahead, I'll again repeat the question. I said, can you please tell me the difference between buying house and retail? है ना? मैंने ई कॉमर्स मैंने ये पूछा, मैं बाइंग हाउस एंड एक्सपोर्ट पूछा ही नहीं आपसे. मुझे पता था आप बाइंग हाउस डायरेक्ट डीलिंग विद द एक्सपोर्ट हाउस से करता है, ब्रांच से करता है, तो आप उसके बारे में बहुत ही इजीली बताओगे. तो मैंने बाइंग एंड रिटेलिंग का पूछा था डिफरेंस, राइट? बिकॉज इफ यू आर अ डिजाइनर, यू आर वर्किंग इन अ बाइंग हाउस फ्रॉम क्वाइट डिसेंट टाइम, सो यू नो डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड रिटेलिंग आल्सो, राइट? सो दैट क्वेश्चन इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम यू, एंड यू हैव डन डिजाइन एज वेल, है ना? तो आप बाइंग रिटेल डिफरेंस पता बताइए. नहीं पता आप छोड़ बोलिए सर वी वर्क विद एक्सपोर्ट एंड द ब्रांच फ्रॉम लाइक सो एंड सो कंट्री. दैट्स इट. ठीक है? जो आपको वो बताइए, फिर आप तब पॉइंट बताइए जो वी वर्क इन दिस फॉर्मेट. वी वहां पे हो गया. अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर ये मैच भी नहीं कर रहा है, दैट्स ओके. यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई आस्क्ड, दैट्स प्रीटी मच फाइन. वेल, टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बाइंग हाउस एंड रिटेल ई कॉमर्स. So buying house is bridging between brands in other countries and manufacturers in our country, whereas retailing is when one brand is directly selling to the consumer. Buying house is not necessarily dealing with the other country. It can be here also. The first line was very much correct. Buying house is bridge between brands and export house. Anybody who has worked in export and or retail or anywhere, they should know. So that's what I asked you, retail and buying house. There's a relation between retail and buying house also. है ना? रिटेलर बाइंग हाउस किसको बेचता है कपड़ा, या किसके लिए काम करवाता है? रिटेलर के लिए, ब्रांड्स के लिए. आप वो एक्सपोर्ट वाले ब्रांड के लिए करो या इंडिया के ब्रांड के लिए करो, राइट? सो यू आर एक्चुअली डीलिंग विद ब्रांड्स ओनली. माइट बी इफ यू आर डूइंग अ सीके टॉमी के लिए आप अगर कर रहे हो एक यूके के लिए, बट सीके टॉमी तो बैंगलोर में भी है ना, इंडिया में भी है ना उनका ऑफिस, राइट? हियर आल्सो दे आर सेलिंग इन द मेनी ऑफ द अब्रॉड ब्रांड. आप जो कॉल पॉलिन ये वो ले लो, कई सारे डीजल ये वो सबका तो इंडिया में भी आज के टाइम में बिक रहा है ना? यूनिक्लो भी बहुत ही अच्छा कर रहा है इंडिया में. आई फाउंड दे आर गिविंग गुड पैकेज. सो प्लीज when you are talking, remember and decode. Knowledge is not a problem. यहाँ पे just your hesitation benchmark हो रहा है, ठीक? या आप ये हो रहा है, बहुत ही कामली रहिए वहां पे. एंड
deal with smile and relax, keep yourself calm in the your PI. I hope this thin line is getting decoded. You are quite okay now about it, right? है ना? कोई और लास्ट मिनट टिप्स आपको चाहिए? मैं और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ऑल पजल हो जाएगा. इफ यू फील लाइक, व्हेन इज योर PI? फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ? Sir, 10 o'clock. 10 o'clock itself. Okay, so then you don't have time also. Morning you can only pray for Krishna. Yeah, my name is Krishna. You can remember Lord Krishna. They can only help you now. Okay. So मैं जरूर प्रे करूंगा. मेरा प्रे बहुत काम करता है. मेरे 3 बच्चे IIT जा रहे हैं इस बार UCEED से. UCEED has just a 30 seat in IIT Bombay, और every year there's some kids they take admission. मैं एग्जाम के बाद सबसे पहले जाता हूँ तिरुपति, है ना, वहां सबके लिए प्रे करके आता हूँ. आफ्टर प्रे 2 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था बच्चों का. आई प्रे फॉर यू गाइज ऑल्सो, बट दैट्स व्हाट आई कैन डू इट. मॉर्निंग थोड़ा आराम से टाइम से चले जाइएगा. ट्राई टू रीच बाई 8-8:30. When you are in Delhi, you're quite familiar with the places, so that's quite good. So that you have a time to relax yourself, observe the place for a 1 hour early is enough. But if you have in a 3 o'clock slot, please don't reach 10 o'clock. Whomsoever is having it. 1-2 घंटा पहले तक बहुत ही काफी टाइम है. Don't go even morning also afternoon के slot के लिए, because then you will get exhausted. You will already mentally tired over there. Looking at everyone PI and other माहौल है, वो भी नहीं करना है ना. ठीक है. 8 बजे है सुबह फर्स्ट क्लास. 8 o'clock. 8 o'clock किसका? चंदना एंड टुमारो खुशी. ओह ग्रेट. Sorry, I am muted. Someone saying something. Sorry. No, sir, mine was on 6. One of you I can't hear. Like, you know. हेलो Yes. सर, सुबह 8 बजे है मेरा भी. कौन है? मैं नहीं देख पा रहा हूँ आपको. आप नहीं सर, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है. अच्छा. So anyone here who usually wake up before 8 o'clock? General day-to-day routine में, या ऐसा he goes office, so obviously. So only Aisha, right? I woke up early today, I think 7:30 around, but I do all, when my routine are also not so good. टाइम नहीं बताऊंगा. सर आज बस उनका ही मॉक PI होगा जिनका PI है. हाँ सॉरी अजीत, जिनका है. आपका भी कल है क्या? सर मेरा तो 4th को है. अरे आप जितनी बार बोलोगे हम आपका PI 1-on-1 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. अभी क्यों सबको कष्ट नहीं देना है. आराम से डिनर करो, रेस्ट करो. देखो उसी का 8 बजे सुबह है PI, है ना. तो आप सब कल भी आएंगे जिनका कल PI है. वी विल शेयर, डिस्कस, विल हैव अगेन सेशन, मे बी similar time, 7-8 o'clock. We'll discuss in the group and we'll help as many as the student is possible across. ठीक है.